Hey everyone, my name is Amit and you're watching Aptitude 360.online. This is video number 8 of time, speed and distance, and in this one we are going to discuss what is a relative speed and what it should be when bodies move in the same direction or they move in the opposite direction. This is such a very important concept and it gets utilized in problems like boat and stream, train problems, circular motion problems, and hence this one is very important for you. इसको समझने की कोशिश करते हैं, है बड़ा कॉमन सेंसिकल ये. Say for example, there is a bullet train, right? How do we make the bullet train? That's how we make the bullet train. It looks like a car, but then it looks like nothing. And say this is bullet train 2. For me, this is bullet train A, and this is bullet train B. And speed of bullet train A is 100 kilometers per hour. Do you understand this? And the speed of the another train is also 100 kilometers per hour. Now, say you're the person who is standing on the ground. Amit is sitting in this bullet train, the first one. And say there is another person. So Rohit is sitting in this bullet train, and you're standing on the ground. What will you see? You see that Amit bullet train, and hence Amit also is moving in this direction with 100 kilometers per hour, and you will also see that bullet train B is also moving in the similar direction with 100 kilometers per hour. आपको लगेगा ये दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं उन्हीं कुछ स्पीड से. अब अगर रोहित को देखना हो अमित को, रोहित को क्या दिखेगा? रोहित को दिखेगा कि अमित की कोई स्पीड है ही नहीं है, राइट? और अमित को क्या दिखेगा? रोहित भी नहीं मूव कर रहा. अच्छा, अमित को दिख रहा है कि रोहित नहीं मूव कर रहा, बट इस वाले पर्सन को जो कि आप हैं, आपको ये दिख रहा है कि रोहित इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 100 किलोमीटर पर आवर. यही तो कॉन्सेप्ट है. सो स्पीड ऑफ अमित और स्पीड ऑफ रोहित is 100 kilometers per hour provided we take the reference point as earth. अर्थ के रेफरेंस में देखेंगे तो both of them are moving with 100 kilometers per hour. But if I need to find out speed of Amit with reference to Rohit, आपको क्या दिखेगा? This is nothing but 0. और अगर आपको हाई स्कूल में पढ़ाई है आपको ये याद हो तो आपने क्या किया होगा? आपने अमित की स्पीड से अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लो अर्थ. अमित की स्पीड से आपने रोहित की स्पीड को घटाया, तो दिस इज 100 minus 100 and this one is coming out as 0. So speed of Amit with respect to Rohit is 0. Similarly, if you find out what is speed of Rohit with respect to Amit, so speed of Rohit minus speed of Amit, this is also 0. तो ये दिख रहा है कि ये इसको लगेगा कि ये नहीं जा रहा कहीं, इसको लगेगा ये ही नहीं जा रहा, बट इसको लगेगा कि ये दोनों मूव कर रहे. दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. नाउ अंडरस्टैंड दिस. हाउ डू वी सिंप्लीफाई व्हेन वी हैव गॉट बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड बॉडीज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो सेम डायरेक्शन का तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप क्या कर दो. इफ दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, this body is also moving in this direction, then speed of A with respect to B is going to be speed of A minus speed of B. And if you need to find out speed of B with respect to A, then this is going to be speed of B minus speed of A. That's understanding number 1. ये तो आपको समझ में आ रहा होगा. Now if I need to find out this, something like bullet train is moving in this direction. The first bullet train is moving in, let me make the bullet train again, something like this. This one is moving in this direction and the speed of this train is 100 kilometers per hour, and the other train is moving in this direction. And does this look like bullet train or does this look like a missile? So this train moves in this direction with 100 kilometers per hour, right? And this is 100 kilometers per hour. मान लेते हैं कि एक ट्रेन में अमित बैठा हुआ है, एक ट्रेन में रोहित बैठा हुआ है. So now understand this. What is going to be relative speed in this case? When bodies are moving in the opposite direction, what is that you should have to do? Speed of Amit with respect to Rohit.
तो आपने क्या सीखा था, स्पीड ऑफ अमित माइनस स्पीड ऑफ रोहित, यही तो किया था आपने। बट एक डायरेक्शन को अगर आपने, जैसे इस वाले डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया, ये वाला डायरेक्शन तो फिर पॉजिटिव होगा नहीं भाई, दो की दोनों तो सिमिलर डायरेक्शन पे जानी चाहिए। सो स्पीड ऑफ अमित माइनस एस ऑफ आर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ अमित प्लस स्पीड ऑफ रोहित कर दोगे, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका क्या आएगा, 100 प्लस 100 200 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ अमित विद रिस्पेक्ट टू रोहित इज कमिंग आउट एज 200 किलोमीटर पर आवर। बड़ा कॉमन सेंसिकल है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है समझने के लिए। आपने क्या देखना था भाई, आप एक पॉइंट देखो यहां पे, से फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ पॉइंट आउट हियर एंड ये रहा बुलेट ट्रेन ए। जब ये 1 घंटे में यहां से यहां गया तो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर गया, यही है ना। दूसरी बुलेट ट्रेन इस डायरेक्शन पे गई तो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर गई, and hence in 1 hour the gap between these two is going to be 200 kilometers। अगर गैप 200 किलोमीटर्स हो गया 1 घंटे में, what is going to be the relative speed? It is 200 kilometers per hour, right? So what is that we are learning? We are learning two very important things. When bodies are moving in the similar direction, आपको subtract करना है। When bodies are moving in the opposite direction, what is that you should be doing? You need to add the speeds. So that's what we need to do. So to find the relative speed when bodies move in the same direction, subtract the smaller from the larger speed। भाई दोनों स्पीड में से कोई तो बड़ा होगा, कोई तो छोटा होगा। So relative speed निकालने के लिए आप क्या कर दो, आप डिफरेंस निकाल दो, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, और इट कुड बी स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए। Simple, when bodies are moving in the same direction. When bodies move in the opposite direction, then what is that you should be doing? In order to find out the relative speed, इन दोनों स्पीड्स को आप ऐड कर दो, किसी के रिस्पेक्ट में किसी की भी निकालनी हो, it is always going to be the addition, right? Now, what kind of problems are we going to get? Problems के थ्रू थोड़ा बेटर समझ में आएगा। A walks at the speed of 4 kilometers per hour. After 4 hours, B starts cycling at the same speed, at the speed of 10 kilometers per hour. After how much distance will B catch up with A? अब आप यहां पे A की जर्नी को शुरू कराओ, ठीक है जी। A रहा ये। What is the speed of A? It is 4 kilometers per hour. And problem tells you that for the first 4 hours, who is going to be moving? Only A is going to be moving. अब 4 घंटे में A भाग के मान लो कि वो इस पॉइंट से यहां तक आ गया, ठीक है जी। Now A is here and A speed of A, as you said, is 4 kilometers per hour. 4 kilometers per hour. Now problem tells you that B starts cycling with the speed of 10 kilometers. अब B कहां पे है? B ये रहा, this is B, and what is the speed of B? B की जो स्पीड है प्रॉब्लम के हिसाब से it is 10 kilometers per hour, and what is the speed of A? In the same direction it is 4 kilometers per hour, and what is the gap as of now? Understand this, distance is equal to speed into time, and what was the speed of A? 4 kilometers per hour, and for how many hours only A ran in this direction? 4 hours. So 4 into 4, what is this? 16 kilometers. So by the time B starts moving in the same direction, A already has covered a distance of 16 kilometers. ये बड़ी सिंपल सी बात है। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट जब भी आपको लगाना हो, आपको ये समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो तभी लगेगा when both of the bodies are moving, और उसके पहले एक बॉडी मूव करके गई होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने क्रिएट किया होगा। यहां पे ए मूव करके गया शुरू के 4 घंटे और उसने वो गैप कितना क्रिएट कर दिया? 16 आवर्स, नॉट आवर्स, किलोमीटर्स। प्रॉब्लम इज आस्किंग यू आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस विल बी कैच अप विथ ए। अब सिचुएशन ये है कि ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन over here with 4 kilometers per hour. B is also moving in this direction with 10 kilometers per hour. And what is the gap between them? Gap is 16 kilometers. Understand this. If B runs 16 kilometers more than A, only then B will catch A. What did I say? Only if
जितना ए भागता है इस डायरेक्शन पे उतना तो बी भागे, साथ में 16 किलोमीटर और भागे, तभी तो वो बी पकड़ेगा ए को. सो बी विल हैव टू रन 16 किलोमीटर्स मोर देन दैट ऑफ ए. एंड व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? Relative speed, because both of them are moving in the same direction, it is going to be 10 minus 4, which is 6 kilometers per hour. And what is the interpretation of saying this? 6 kilometer per hour is the relative speed. इसका ये मतलब है कि B is going to be running 6 kilometers more than that of A in 1 hour. What did I say? B एक घंटे में A से 6 किलोमीटर ज्यादा भागेगा. ऑब्वियसली यही तो होगा भाई. B भागा 10 किलोमीटर एक घंटे में, ए भागा 4 किलोमीटर एक घंटे में. सो बी हैज रन मोर देन ए बाई हाउ मेनी किलोमीटर्स? 6 किलोमीटर्स. दैट्स द मीनिंग ऑफ सेइंग व्हाट इज रिलेटिव स्पीड. आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लगाना, आपको इसको कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए. सो आई वुड से दैट रिलेटिव स्पीड इज 6 किलोमीटर्स पर आवर. Do you understand the interpretation? I hope you're understanding. What is the relative distance out here? The relative distance is 16 kilometers. भाई B A से एक घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा भागता है, और उसको ज्यादा भागना कितना है? उसको ज्यादा भागना है 16 किलोमीटर्स. So we know the speed, we know the distance. What is going to be the time? Time is going to be distance upon speed, which is 16 upon 6, which is going to be 8 by 3 hours. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 8 by 3 hours में B certainly is going to catch up with A, right? अब आपसे प्रॉब्लम क्या पूछा गया कि what is going to be that distance? यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्टेंस होगा कितना? That is not going to be 16. That is going to be, understand, if B will have to run, speed of B is how much? Speed of B is 10 kilometers per hour. And for how many hours B is running? This is 8 by 3 hours. So what is going to be total distance? Distance is going to be 10 into 8 by 3, which is going to be 80 by 3, which is going to be this option, 26.7. And if you find out for A, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई A के लिए आप कितना निकालोगे. तो 8 by 3 hours में A कितना भागा? So speed of A is given to you as 4 kilometers per hour and time is 8 by 3 hours. तो पता करते हैं कि ये भागा कितना. So distance is 4 into 8 by 3. So that's only 32 by 3 kilometers. That's not 80 by 3. बट आपको ये भी चीज याद होना चाहिए कि 32 by 3 किलोमीटर्स तो तब भागा जब B भी भागना शुरू हुआ. उसके पहले तो ऑलरेडी A कितना भाग चुका है? उसके पहले ऑलरेडी A 16 किलोमीटर भाग चुका हुआ है. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग 80 by 3. प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड. डज दिस मेक सेंस टू यू? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. देयर आर ओनली टू थिंग्स. बॉडी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सब्सट्रैक्ट कर दो. Body is moving in the opposite direction, add कर दो. As simple as that. A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running. चोर पता नहीं भागा क्यों देख के पुलिस को. अच्छा, ये रहा thief. ठीक है जी, ये है thief और ये है पुलिस. And what is the gap between them? जब चोर भागना शुरू हुआ, this is 200 meters, है ना? 200 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The speed of thief is given to you as 10 kilometers per hour. And the speed of police is given to you as 11 kilometers per hour. आपसे प्रॉब्लम क्या पूछा जा रहा है? What is the distance between them after 6 minutes? एक तो कितनी देर में पकड़ लेगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता था. इन हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस विल नैप द थीफ? दैट कुड हैव बीन वन प्रॉब्लम. बट हियर द प्रॉब्लम इज व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन देम इन 6 minutes. नाउ relative speed is what? Now you understand 11 minus 10, which is 1 kilometer per hour. What is the interpretation of saying that the relative speed is 1 kilometers per hour? It is the police will have to now, if police will be running 1 kilometer more than that of thief in 1 hour.
पुलिस भागा 10 किलोमीटर, चोर भागा पुलिस भागा 11 किलोमीटर, चोर भागा 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का गैप वहां पे कम हुआ या बढ़ा, जो भी हुआ, बट देन दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइटिंग 1 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड। नाउ 6 मिनट्स में पहले तो हम डिस्टेंस निकाल देते हैं कि कितना कवर हो गया with this relative speed. So this is going to be what? 1 into time is 6 minutes. I will convert this into hours. If you simplify this, it is going to be 1 by 10 kilometers. 1 by 10 kilometers को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो it will be 100 meters. इसका मतलब क्या है कि 6 मिनट में तो पुलिस 100 मीटर ज्यादा भागा। किससे 100 मीटर ज्यादा भागा? चोर से। So if police has already covered the distance, narrowed the gap of 200 meters by 100 meters, what is still the gap between them is still 100 meters. So it's a pretty simple problem. आपको करना क्या है? Step number 1, relative speed निकालो. Step number 2, जो टाइम दिया हुआ है उसी को मल्टीप्लाई कर दो. You will find out the distance. As simple as that. Now, if you understand this one, let's try to solve this one. It says that a thief steals a car at 2:30 p.m. and drives it at 60 kilometers per hour. The theft is observed at 3 p.m. तो 2:30 से लेके 3 p.m. तक तो थेफ्ट को ऑब्जर्व करा ही नहीं गया. And the owner sets off in another car from same place at 75 kilometers per hour. When will he catch the thief? That's the problem. So ये रहा thief, चोरी किया इसने कार at 2:30 is here. 2:30 p.m. starts running in this direction at 60 kilometers per hour. 2:30 to 3, half an hour. हाफ एन आवर में चोर गया कितना होगा भाई? 1 घंटे में 60 किलोमीटर्स, तो हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर्स. नाउ यहां से चलते चलते ये थीफ यहां पे आ गया. एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन and now this is the owner. ओनर को लगा भाई चोर तो ले गया मेरी कार. अब चोर है कितना दूर? चोर है 30 किलोमीटर अवे. अब ओनर भागा, क्या किस स्पीड से भागा? इट इज 75 किलोमीटर्स पर आवर. एंड ओनर विल हैव टू रन इन द सेम डायरेक्शन एंड द थीफ इज ऑलरेडी रनिंग with what speed? 60 kilometers per hour. Understand this. If the owner will have to nab the thief, step number 1, the owner will have to run 30 kilometers more than that of thief. Owner को thief से 30 किलोमीटर ज्यादा भागना पड़ेगा तभी तो वो पकड़ेगा. And what is the relative speed? Both of them are moving in the same direction. So I would say that relative speed is 75 minus 60, which is 15 kilometers per hour. And what is the interpretation of this speed? It is the owner is running 15 kilometers more than the thief in 1 hour, right? And distance is equal to speed into time. कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको भागना है? 30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा भागना है. अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इटसेल्फ. What is the relative speed? It is 15 kilometers per hour. और वो कितनी देर में उसको कवर कर लेगा? Now you understand it is in 2 hours. भाई अगर गैप उन दोनों का 1 घंटे में 15 किलोमीटर कम हुआ तो 2 घंटे में उनके बीच का गैप 30 किलोमीटर कम हो जाएगा. प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो जाएगा. ओनर चोर को पकड़ लेगा, डांटेगा, लगाएगा 2 थप्पड़ वहां पे उसको. और अगर ये हुआ तो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है कि कितने बजे होगा. अंडरस्टैंड दिस. 2:30 पे ये चोरी हुई, 3 o'clock पे ओनर को पता चला. ओनर कितनी देर भागा? 2 घंटे भागा. तो ये जो चोर पकड़ा गया वो कितने बजे पकड़ा गया? 5 PM पे. प्लीज डू नॉट राइट दिस आंसर एज 4:30. ये गलत हो जाएगा आंसर आपका, राइट? 2 hours. आफ्टर 2 hours का जब यहां से ओनर भागना शुरू हुआ. ओनर कब भागना शुरू हुआ प्रॉब्लम के हिसाब से? एट 3 o'clock. So these problems are way too simple. Once you understand the essence, they are way too simple. Pashchim Express left Delhi for Mumbai at 2:30 hours, traveling at a speed of 60 kilometers per hour. And August Kranti Express, दो की दोनों जो ट्रेन है, Pashchim Express and August Kranti Express, they are leaving Delhi and they are running towards Mumbai. एक जो ट्रेन है पहली वाली पश्चिम एक्सप्रेस, वो 2:30 पे ही चल गई. तो पश्चिम एक्सप्रेस ने यहां से शुरू किया
at 2:30 p.m. And what is the speed of this train? It is 60 kilometers per hour. August Kranti Express left Delhi for Mumbai in the same day at 4:30. So 2:30 to 4:30 only August Kranti Express, Pashchim Express has been running. तो ये होगा क्या यहाँ पे? Understand this. In 2 hours, Pashchim Express train will come over here. And कितना distance ये हो जाएगा? This gap is going to be 120 kilometers. Now you understand why this is going to be 120 kilometers. 60 into 2. 2 घंटे ही तो भागा. अब यहां से निकला अगस्त क्रांति. Now what is the speed of August Kranti? Is given to you in the problem. It is 80 kilometers per hour. 80 kilometers per hour. What the speed of Pashchim Express is? 60 kilometers per hour. What is the problem? How far away from Delhi will the two trains meet? अब अगर इन दोनों ट्रेन को मीट करना है तो अगस्त क्रांति को पश्चिम एक्सप्रेस से 120 किलोमीटर ज्यादा भागना पड़ेगा अगस्त, बिकॉज द गैप बिटवीन दीज टू ट्रेन्स इज 120 किलोमीटर्स एज ऑफ नाउ, एंड August Kranti is running at 80 kilometers per hour, whereas Pashchim Express is running at 60 kilometers per hour. So its relative speed is going to be how much? 80 minus 60, which is 20 kilometers per hour. And what is the interpretation of saying 120 kilometers per hour? It means the August Kranti Express will be running 20 kilometers more than that of Pashchim Express in 1 hour. भाई 1 घंटे में जो गैप है वो 20 किलोमीटर्स कम हो गया, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर्स, 3 घंटे में 60 किलोमीटर्स, 4 आवर्स में 80, 5 आवर्स में 100, 6 आवर्स में 120 गैप कंप्लीट हो गया. सो अगर आपका दिमाग ऐसे काम करेगा तो फिर बड़ा ही अच्छा है. सो व्हाट इज दैट वी नीड टू डू आउट हियर? इट इज समथिंग लाइक दिस. If I have to solve this problem mathematically, I would say that what is going to be the distance? Distance is going to be speed into time. What is the relative speed? 20 kilometers per hour. Right? And what is the distance? It is 120. तो कितनी देर में ये पकड़ा अगस्त क्रांति उसको पकड़ लेगी? 120 by 20. It is going to be 6 hours. अब ये 6 hours तक तो दोनों ट्रेन चलेंगी. 6 आवर्स में ये गैप दिल्ली से होगा कितना? तो अगस्त क्रांति के लिए अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन? 80 किलोमीटर्स पर आवर. फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज बीन रनिंग? 6 आवर्स. सो फॉर 80 into this, what is this distance? 480 kilometers. August Kranti will run 480 kilometers from Delhi and will meet the Pashchim Express. How about Pashchim Express? अगर Pashchim Express का डिस्टेंस निकालना हो तो पश्चिम एक्सप्रेस के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज व्हाट? 60 into 6. इट रन्स ओनली 360 किलोमीटर्स. कैसे जाएंगे? अंडरस्टैंड दिस. 480 इज गोइंग टू बी, अंडरस्टैंड, 480 इज 360 प्लस 120. यानी ये जो ट्रेन है अगस्त क्रांति, ये 360 तो भागेगा जितना ये ट्रेन भागा. पश्चिम एक्सप्रेस जितना ये भागा उतना तो भागेगा, प्लस 120 किलोमीटर्स. व्हाट इज 120 किलोमीटर? जो उनके बीच का गैप था वो भी तो उसको भागना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मीट द पश्चिम एक्सप्रेस. सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम. सिंपल है ये, राइट? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? इट इज गोइंग टू बी 4. Let us try to simplify this problem. It says that a passenger train running at a speed of 80 kilometers per hour leaves a railway station 6 hours after the goods train leaves and overtakes it in 4 hours. तो कौन ओवरटेक करेगा? पैसेंजर ट्रेन. तो सबसे पहले भाग के कौन गया? गुड्स ट्रेन. मान लो गुड्स ट्रेन की स्पीड ले लो. गुड्स ट्रेन की स्पीड आपने ले ली, मान लिया x किलोमीटर्स पर आवर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? So what is the total distance that it is going to cover in 6 hours? So it is going to be x into 6. So 6x kilometers the goods train has already run. अब ये यहां से कहां चल के आ गया? मान लो this is the goods train. And now the passenger train has started. The speed of passenger train is given to you in the problem as 80 kilometers per hour. And the speed of goods train, which we need to find out, we have assumed this as x kilometers per hour.
एंड इनके बीच का जो गैप है, एज ऑफ नाउ द गैप बिटवीन दीज टू is 6x kilometer. You understand this? Now, what is the relative speed? Relative speed relative is 80 minus x kilometers per hour. Do you understand this? And what is the distance? The relative distance as of now is 6x kilometers. Why am I saying this? Why am I saying this? Understand, if the passenger train will have to meet the goods train, the passenger train will have to run 6x kilometers more than that of the goods train. और ये कितने देर में ऐसा कर पा रहा है? टाइम कितना बोल रहा है आपको? वो बोल रहा है 4 hours में, right? And there is no doubt about relative speed. It has to be 80 minus x because both of them are moving in the same direction. Now let us figure it out. Let us figure it out. So this value, distance is 6x and speed is 80 minus x into 4, right? Now let us simplify. 6x is going to be 320 minus 4x. So 4x goes on this side, this becomes 10x, it is 320. The value of x comes out as 32 kilometers per hour. That is what it is. And what is the answer out here? This one. Problem is very simple, right? Now, if you understand this, pause the video, try to solve this question on your own, people. A and B are two stations 10 kilometers apart. A man P starts from A and B are 10 kilometers apart, right? 10 kilometers apart. A man P starts from A. A man P starts, this is the man, starts from A and travels towards B at the rate of 3 kilometers per hour. 3 kilometers per hour. And another man Q starts from B और ये इधर की स्पीड से जाता है 2 kilometers per hour. Both of them are moving in the opposite direction. They are approaching each other, and since they are approaching each other, what is going to be relative speed? It is going to be 3 plus 2, 5 kilometers per hour. यानी उनके बीच का जो गैप है वो 1 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 5 kilometers. And what is the gap between them? It is 10 kilometers. Don't you think 2 घंटे में दोनों मिल जाएंगे? यही होगा ना. Distance is speed into time. What is the distance? 10 kilometers per hour. 5 into t. पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई 2 घंटे लगेंगे उनको. आपसे प्रॉब्लम क्या पूछा गया? When and where do they meet? तो 2 घंटे तक तो ये वाला भी भागेगा और 2 घंटे तक ये वाला भी भागेगा. 2 घंटे तक ये कितना भागेगा? 3 into 2 6. एंड 2 घंटे में ये कितना भागेगा? 2 into 2 4. So after 2 hours you have got option A and D. After 2 hours 6 kilometers from A, that's the answer. So what is the option out here? A is the option. Now since you're understanding all of it, this is the last problem of this video. It says that two trains start from stations A and B and travels towards each other. So this is station not number, station A and station B, and they're traveling towards each other at a speed of 50 kilometers and 60 kilometers. So this is 50 kilometers per hour and 60 kilometers per hour. ठीक है जी, ये दोनों बोल दिया कहानी. अब उसके बाद इसने क्या बोला? At the time of their meeting, the second train has traveled 120 kilometers more than the first train. यहां से अगर इसको मान लो मीटिंग पॉइंट है, यहां से यहां, and if the first train has moved x kilometers, don't you think that the second train is going to move x plus 120 kilometers? यही तो प्रॉब्लम बोल रहा है. Because it says that the second train has traveled 120 kilometers more than the first train. Now when they're starting from the same at the same time, the travel time of A to reach from this point to this point and the travel time of B to reach from this point to this point, both of them are going to be the same. तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का ट्रैवल टाइम तो सेम है मिलने के लिए, एंड टाइम क्या होता है? distance upon speed. So this is going to be x by 50. And
what is going to be the travel time of this one? It is going to be distance upon speed, and these two are equal. I hope you're understanding this. So if you simplify this, this is going to be 6x 5x plus 600. So the value of x comes out as 600. आपसे क्या पूछा गया? The distance between A and B. A and B का बीच में distance देखो. This one is x and this one is x plus 120. So this is x plus 120, which is 2x plus 120. The value of, we have found out the value of x, which is 600. So 600, 1200 plus 120, this is coming out as 1320 kilometers. Problem simplified ho gaya. So this is what we had in this video, people. In the next video, we will do better problems that are most probably asked in your examination. Difficulty level थोड़ी better होगी, but concept यही होगा, relative speed. So there are only two things that we have learned in this video, and we will be applying our knowledge in the next video. So I'm gonna see you there. Till then, bye bye and take care, and thank you very much for watching this one.